Hi student, today we are going to see driver installation steps for Unix device driver. Installing a device driver in Unix system involves the following steps. Compiling the device driver, modifying the kernel configuration, tables and file, linking the device driver with the kernel object file to produce the new kernel, creating a necessary entries in a directory, and last rebooting the system with the new kernel. Okay, so these are the basic steps needed for installing a driver into the system. Installation of any Unix driver will require above step, and the detail vary widely between the version of Unix. Based on the version of Unix, the detail may vary. Okay, let us start with the first step, that is compiling the driver. The compiling the driver is similar to compiling any C program. Since driver is not a standalone program, it is always compiled to produce an object rather than a link executable. Also, on some systems, special flags are needed to ensure that the correct part of the include file are used and that the compiler generate a module appropriate for linking into the kernel. As we see, necessary information is obtained from the system documentations, and compiling a driver is the same process as we are compiling the C program and generating the object code. Okay, the next step is to modifying the kernel configuration table to reflect the addition of a new driver. And the two configuration files are mdevice and sdevice. As we know, we are compiling the drivers and we are installing a new driver. So the kernel of operating system need to be updated so that it will reflect the information about the new driver that is installing into the system. The method basically varies between the different version of Unix. Here we can see a two configuration file, that is mdevice and sdevice. Let us first see the mdevice. The mdevice file contain an entry for each device driver that exists on a system. Means mdevice क्या करेगा, जो भी entries रहेंगी each drivers की, वो mdevice जो है वो configuration file में आपके store रहेगा. The next is a sdevice. The sdevice file contains the information for each driver that is to be incorporated into the kernel. That is to be incorporated into the kernel. Now let us see mdevice file in detail. The mdevice file contains device name, function list, device characteristics, handle prefix, block major number, character major number, minimum unit, maximum unit DMA channels. Okay. ओके, बेसिकली एम डिवाइस जो है ना वो 9 फाइल्स कंटेन करता है. तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन एक एक फाइल को हम लोग देखेंगे. सबसे पहला रहता है दैट इज डिवाइस नेम. डिवाइस नेम में क्या रहेगा, इट कंटेन द इंटरनल नेम ऑफ डिवाइस ड्राइवर, internal name of device driver, whatever the name of the device driver that contain the device name. Next is the function list. Function list में क्या रहेगा, it specifies the entry point that are declared within the device driver and each entry is represented by the सिंगल लेटर. और जो हर कोई एंट्री जो है वो एक सिंगल लेटर से ही रिप्रेजेंट की जाएंगी. उसके बाद थर्ड फाइल रहती है आपकी डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स. ये क्या स्पेसिफाई करेंगी, ये स्पेसिफाई करेंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्राइवर. Again, the field consists of list of letter with each letter representing the characteristics. और हर लेटर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आई रहता है तो आई क्या डिफाइन करता है, स्मॉल आई डिफाइन द डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉलेबल. और सी है तो इट इज कैरेक्टर ड्राइवर, डी है तो इट इज डिवाइस ड्राइवर. तो दिस काइंड ऑफ थिंग एक्सेट्रा, इस तरह से जो है सिंगल लेटर जो है कुछ रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट फाइल रहता है आपका हैंडल प्रीफिक्स. फॉर एग्जांपल अ लाइन प्रिंटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4 कैरेक्टर एंड मस्ट बी यूनिक. दिस इज द प्रीफिक्स यूज फॉर ईच ऑफ द ड्राइवर एंट्री पॉइंट. हैंडल प्रीफिक्स जो है वो एंट्री पॉइंट ड्राइवर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट फाइल इज अ ब्लॉक मेजर नंबर. नाउ व्हाट इज ब्लॉक मेजर नंबर? Major device number. This value is assigned automatically at the time of installation.
ये क्या करेंगे हम लोग, ब्लॉक डिवाइस नंबर मेजर नंबर मीन्स वी आर असाइनिंग अ मेजर डिवाइस नंबर, जो डिवाइस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उसको हम लोग डिवाइस नंबर असाइन करेंगे। नेक्स्ट फाइल इज अ कैरेक्टर मेजर नंबर, next file is a character measure number. Next one is a minimum units, sorry, minimum units. This specifies the minimum number of these devices that can be specified in a as device file, means how many minimum number of devices are specified, ये हम लोग ये फाइल के थ्रू स्टोर करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ मैक्सिमम यूनिट, ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि कितने हम मैक्सिमम यूनिट जो है हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज डिवाइस फाइल। एंड लास्ट वन इज अ डीएमए चैनल। डीएमए चैनल क्या स्पेसिफाई करेगा, डीएमए चैनल स्पेसिफाई दैट व्हाट डिवाइस विल यूज इफ नो डीएमए इज नॉट यूज टू सेट द फील्ड टू बी -1। अगर कोई भी डीएमए चैनल वहां पे यूज नहीं हो रहा है तो वो फील्ड को क्या करेगा, -1 से सेट कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम डिवाइस फाइल। Okay, next we are going to see a S device file. As we already know that S device file contain the information of for each driver that is incorporated into the kernel. Okay, S device files are having a 10 fields. Now, one by one we are going to see these 10 fields. Now, field number one is a device name. It is an internal name for a device driver up to the 8 कैरेक्टर लॉन्ग। इसका लेंथ कितना रहेगा, 8 कैरेक्टर का रहेगा एंड मस्ट मैच विद द डिवाइस नेम फील्ड फॉर वन ऑफ द एंट्रीज इन एम डिवाइस फाइल। जो एम डिवाइस फाइल में जो डिवाइस नेम है वो उसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड रहेगा आपका कॉन्फ़िगर। दिस इंडिकेट वेदर और नॉट दिस डिवाइस आउट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कर्नल। अप्रोप्रिएट वैल्यू इसमें क्या रहेंगे, y एंड n, दैट मीन्स व्हाट, यस और नो। मीन्स ये जो कर्नल में जो है ये अप्रोप्रिएट डिवाइस जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, वो हम लोग कॉन्फ़िगर के थ्रू चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज अ यूनिट। नेक्स्ट फील्ड क्या रहेगा, यूनिट। दिस स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ यूनिट इंस्टॉल्ड एंड द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन द लिमिट स्पेसिफाइड इन द एम डिवाइस फाइल। यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि कितने यूनिट्स जो है वहां पे इंस्टॉल किए गए हैं और इसकी जो वैल्यू है, हमने इसके पहले एम डिवाइस में देखा था मैक्सिमम यूनिट एंड मिनिमम यूनिट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू किसके बिटवीन रहेंगी वो डिपेंड करेगा उन फील्ड पे। नाउ नेक्स्ट वन इज एलपीएल। ये फील्ड स्पेसिफाई करेगा द सीपीयू प्रायोरिटी लेवल एट विच द इंटरप्ट विल बी प्रोसेस्ड। मीन्स होता क्या है, हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बीच में ही कोई इंटरप्ट आ रहा है। इंटरप्ट मीन्स व्हाट, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ और जस्ट ये हम लोग, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और जस्ट क्लासरूम में कोई बाहर से आ रहा है और जस्ट मे आई कम इन सर बोल रहा है, तो वो क्या गया है, मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो एक इंटरप्ट आ गया, ठीक है। इंटरप्ट आ गया, किसी ने बीच में मुझे टोक दिया। तो दिस इज हाउ इन कंप्यूटर ऑल्सो वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड अनदर प्रोसेस कम्स, so that kind of thing is called as an interrupt. This specifies the CPU priority level at which the interrupt will be processed. Now it will depend, अगर मुझे प्रिंसिपल सर का फोन आता है तो मैं है तो मैं क्या करूंगा, so it's a priority work, तो मैं हो सकता है कि उसे मोस्ट प्रायोरिटी दो as compared to the other work, ठीक है। So if driver has a no interrupt handler, then put the 0 in this field. अगर उस पर्टिकुलर ड्राइवर में हमने जो इंस्टॉल किया अगर उसमें कोई इंटरप्ट हैंडलर नहीं है तो हम लोग उस फील्ड में क्या डाल देंगे, 0 इंटर कर देंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ फील्ड रहता है दैट इज इंटरप्ट टाइप। दिस स्पेसिफाइज द इंटरप्ट आर्किटेक्चर यूज्ड बाय दिस डिवाइस। अप्रोप्रिएट वैल्यू इंक्लूड number 1, no interrupt line required from device. The device require an interrupt line if the driver support more than one hardware कंट्रोलर, each कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ सेपरेट इंटरप्ट। मींस व्हाट, जो भी हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया है अगर वो जो ड्राइवर है एक से ज्यादा हार्डवेयर को अगर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे देयर मे बी अ डिफरेंट कंट्रोल लाइन। तो किस कंट्रोल लाइन से इंटरप्ट आया हुआ है, इट मे बी पॉसिबल कहीं से उसको इनपुट गया है, आउटपुट गया है, जो भी इंटरप्ट आया हुआ है, ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करेगा। इफ द ड्राइवर सपोर्ट मोर देन वन हार्डवेयर कंट्रोलर, each controller will share the same interrupt। ये सेम भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है। एंड ईच कंट्रोलर विल शेयर द सेम इंटरप्ट। मल्टीपल डिवाइस ड्राइवर हैविंग द सेम आईपीएल लेवल कैन बी शेयर। मींस मल्टीपल डिवाइस ड्राइवर सेम आईपीएल लेवल जो है वो शेयर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है, नेक्स्ट फील्ड रहता है दैट इज वेक्टर। ये फील्ड क्या स्पेसिफाई करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा इंटरप्ट वेक्टर यूज बाय द डिवाइस।
इसमें क्या कोड है, जीरो रहेगा इफ नो इंटरप्रेटर, अगर वहां पे कोई इंटरप्रेटर नहीं है तो जीरो स्पेसिफाई करेंगे। एंड दिस नंबर मस्ट मैच द हार्डवेयर इंटरप्ट लाइन ऑर्डर बाय द हार्डवेयर, सॉरी यूज बाय द हार्डवेयर। सेवंथ फील्ड आपका रहता है स्टार्ट आईओ, दैट इज SIOA। These specify the starting address of an IO bus through which the device communicate. If the device does not respond to any IO address line, use zero. मीन्स अगर उस डिवाइस ने किसी भी एड्रेस लाइन को अगर कम्युनिकेट नहीं किया है तो उसमें जीरो रहेगा, अदरवाइज द देयर विल बी अ वैल्यू। नाउ एंड आईओ एड्रेस, दैट इज EIOA, ये क्या स्पेसिफाई करेगा, ये फील्ड स्पेसिफाई करेगा एंडिंग एड्रेस ऑन द IO थ्रू विच डिवाइस कम्युनिकेट। मीन्स कौन सा डिवाइस जो है कम्युनिकेट किया है उसका एंडिंग एड्रेस जो है ये फील्ड आपका डिनोट करेगा। नाउ नाइन्थ फील्ड इज अ स्टार्ट कंट्रोलर मेमोरी एड्रेस, दैट इज SCMA। ये क्या स्पेसिफाई करेगा, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ डिवाइस dual ported memory accessible both to the device and to host CPU. If the device does not respond to any memory address, use zero। अगर वो डिवाइस जो है किसी भी मेमोरी एड्रेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे वहां पे, जीरो। एंड लास्ट वन इज अ एंड कंट्रोलर मेमोरी एड्रेस, मींस व्हाट, दिस स्पेसिफाइज द एंड एड्रेस ऑफ डिवाइस ड्यूअल पोर्टेड मेमोरी। For installing the device driver, the command we are used, that is id install, and building a new kernel we are using a command id build. A system utility is used to run, system utility to run is a inbuilt, ठीक है। So inbuilt command हम लोग यूज करते हैं for building a new kernel। Okay, let us see how to create a entries in a DEV directory. In order to access the driver, we need to create a special file in a DEV directory that refers to device driver. This can be done manually by mknode command, and when the driver is installed, the node file is created that define the entries in a DEV, and this file contain the following information. First one is a device name. This is the internal name of device driver, same as the M device and S device. Node name, this is the name of the special file to be created in a DEV directory. Means जो एक file create होंगी उसका जो name रहेगा that is called as a node name. Next one is a node type. This specifies whether the special type is to be a character or black. And last one is a minor device number. This specifies the minor device number of this special file. This device driver installation software will generate a unique major device number automatically and associated it with device name given in the first field of a mdevice file. When the system examines the node file and goes to create the specified file in a DEV directory, it will use the device name in the first field of node file. Now last step is to reboot the new kernel. Before rebooting the new kernel, required a full system backup and make the copy of old kernel. Rebooting is required because we are installing a new device driver in the system, so we need to reboot the system so that it will be properly working.